हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो. सर अनम्यूट बोल. काय बोलू? अरे चालू करेल. नमस्कार सूर्यवंशी सर. आवाज येतोय तुम्हाला? तुमचा आवाज थोडा स्पष्ट येत नाही. दोन मिनिटांमध्ये सुरू केलं सर.
Okay. Very good afternoon to one and all. Myself, Mr. R.K. Shirsat, and I feel extremely glad to welcome everyone to this online webinar on intellectual property rights, patents, designed organized by the Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, Government of India, Nagpur, in association with IQAC and Department of Library of Shankarlal Khandelwal College, Akola, under National Intellectual Property Awareness Mission. It's a happy feeling to stand in front of you on this online mode of dais with the objective of gaining insight into the place of intellectual property rights with our daily work. Appreciating the value of intellectual property every year. April 26 has been marked the World Intellectual Property Right Day in order to learn the role that this IPR plays encouraging the innovation and creativity. Actually, the IPR is a product of research and innovation which are tied to the university's strategic objective of contributing to the development of society through creation, preservation, application and dissemination of the knowledge. So this way, this IPR plays an essential role in innovation and creativities. And that's why this workshop has been organized to help us to improve, to protect our intellectual property rights and to raise the awareness of how patent, copyright, trademarks and design impacts on daily life, to celebrate the creativity and the contribution made by the creators and the innovators to the development of society across the globe. So for that, with a great pride and honor, I am here to introduce to you our resource person, Honorable Dr. Bharat Suryawanshi sir. Sir is working for more than 18 years in Central Government Office under the Patent Office, Ministry of Commerce and Industry, and presently working as a Assistant Controller of Patent and Design. He has done PhD on bioefficiency and phytochemical studies on medicinal plants of Kinvat and Mahur, forest of Nanded district from Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded, Maharashtra. He has done MPhil on plasmid profile of proteolytic lactic acid bacteria from Gulbarg University, Karnataka. Sir has completed his PG in biotechnology from Gulbarg University, Karnataka and secondary education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bidar, Karnataka. Sir has published national and international papers and also delivered many lectures on IPR in various parts of country. Sir was deputed for training at Tokyo, Japan on examination and IPR issues. Sir has been a part of various judicial, national, international training programs regarding IPR practices. Sir has given landmark decision by rejecting Pfizer patent application for arthritis drug which was filed in India. With this brief information, let's welcome a very zestful person, Honorable Dr. Suryawanshi sir. Hello sir, Suryawanshi sir. Yes, can I start now? Yes, good morning to all. I also welcome you all for the IPR session on behalf of Rajiv Gandhi, National Institute of Intellectual Property Management, Nagpur. As you might have knowing about what is intellectual property, many of us know we have written the books, stories, some might have done good inventions, they might have done PhDs with best degrees. Today I am here to make you understand what is intellectual property. I'll share my knowledge by sharing the slides.
First of all, I introduce my office where I'm working. Our office is called as Office of the Control General of Patents, Designs, Trademark, and Geographical Indication. You might are knowing we are having offices at Kolkata, New Delhi, Mumbai, and Chennai. We are having training center very near to you, that is in Nagpur. It's only one in India. We are giving training to all the faculties, all the students of all the branches, lawyers, company managers, even those who are interested to know about the Indian Patent Act. They are coming here to know about the patents, design, trademark, and GI. We are having trademark offices in addition to four. One is at Ahmedabad, Gujarat. Geographical indication office at Chennai. These are the pictorial view of offices: Mumbai, Chennai, Delhi, and Kolkata. This is our training center. This is our website. If you are unaware of the IPR, please log on to this and you'll come to know about the different intellectual property rights. Again, we're keeping updates on social media for the webinars, for the IPR 1 day, 2 day, 3 day programs. So if you are with Facebook or Twitter, please log on to this and please make a note of our programs, join and be perfect in the IPR. Let us see today's topic, what is intellectual property? You can carefully see something blooming in the mind. It means I want to say that the product of mind is called intellectual property. What is that product? For example, somebody among you is thinking to give biodiesel. What is that? It's an alternative solution to petrol and diesel, because day by day we know petrol diesel rates are getting higher and we don't know is it available to the next generation or not, because it's a not a renewable source of energy. So somebody among us is thinking to give biodiesel. It's an idea coming from your mind, therefore it's an intellectual property, because you are creating that, you are getting idea because you are thinking on a particular topic and trying to give solution for that, therefore it's called intellectual property. I'll quote another example to make you understand. In December 2019 we heard about the coronavirus. At that time we are not having any vaccine, but scientists all over the world started to carry the research. In the middle of 2020, we got Covaxin, Covishield, Sputnik. What is this again? It's an intellectual property which arises from human mind. That's an intellectual property. आपने देखा होगा मराठी पिक्चर दे धक्का, उसमें मकरंद अनासपुरी एक गाड़ी का पार्ट बनाता है. दैट्स एन एनहांस एफिकेसी ऑफ दैट डिवाइस. वो नया डिजाइन होता है, नया टेक्नोलॉजी, इसलिए उसे पेटेंट मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है. His friend has registered that patent. When he went to Mumbai for his daughter's dance, they sold that part and some other company claimed a mera patent hai. Then his friend shown certificate of patent and he has got crores of rupees at the end of movie. What is that? It's an intellectual property which is make used in the Dedakka picture in Marathi. So that's an intellectual. If you're writing books, novels, stories, that's a copyright. If you are writing a new novel, then it's an intellectual property in the form of copyright. If you are creating new design for any product, like I am having water jug, this also a jug. So these are the two designs which are new, you can get registered in the government of India. If you are doing technology like ATM machine, CT scan machine, product, it's an intellectual property in the form of patent. So any kind of property which arise from your mind is called intellectual property. Bauddhik Sampada Adhikar, Bauddhik Sampada property. How that property arises? Whenever you're in the classroom, जब आप क्लास में होंगे और डिस्कस करते होंगे आपके प्रोफेसर के साथ, या अलोन या ग्रुप में कुछ डिस्कस करते, कुछ प्रोजेक्ट करते हो, नया सोल्यूशन कुछ लाते हो, therefore the property which arises from human mind is called intellectual property, चाहे जो भी नया हो. Let us see what is the background of property.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी बोलते ही अपने मन में आता है कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, इवन कार है, और मेरे पास खेती भी है, बहुत कुछ है, तो मैं श्रीमंत हूँ. लेकिन और एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वी कैन नॉट मेजर. इट्स इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज industrial property and copyright, wherein industrial property includes patents, designs, trademark, and geographical indications. How to define the intellectual property? हर एक को डेफिनेशन होता है, कैसे डिफाइन करे? इंटेंजिबल कि वी कैन नॉट टच, क्रिएशंस ऑफ होम, ह्यूमन इंटेलेक्ट, अपने माइंड से, एंड हैविंग कमर्शियल वैल्यू, असेट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी. जैसे कि मैंने बोला बायोडीजल, आप यदि बायोडीजल बनाते हो तो एनी कंपनी लाइक रिलायंस, HPR, भारत पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम कैन अप्रोच टू यू फॉर लाइसेंसिंग, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी वो आपके पास आएंगे, लाइसेंस अग्रीमेंट बनेंगे और आपको रॉयल्टी भी दे देंगे वो, और आपका फार्मूला ले सकते हैं. इसलिए इसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज एन असेट बोल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड, फ्लैट, प्लॉट नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आपका असेट है. Patent is called as an exclusive right. For example, if you are developing biodiesel, the right is with you, not with your father, mother, or sister. Only you can exercise the power of that. Therefore, it also called as a negative right. Again, IP is also called as an territorial right. It means once you are applying a patent in India, your right is only in India. You cannot claim your right in USA, Japan, Germany, or Pakistan, because you have to file there. If you are filing your application in foreign countries, then you should choose two routes. One is called PCT, another is called conventional application. These are the two routes wherein you can claim your right. You can file the patent in the other countries. Again, IP is also called as an licensable right. It means if you are developing any license, you can, any new things, you can license to anyone. For example, Serum Institute of Pune is developing Omicron vaccine, then they can license to Bharat Biotech of Hyderabad or Biocon of Bengaluru for more production, because we know our country is populated, we know how much population we are having. So to produce in more, we are licensing. So IP is an licensable right. What is patent? Exclusive, monopoly privilege, or right granted by the government to the patentee for 20 years from the date of filing, or priority for commercial gain. Means we can get something out of that. When you are disclosing everything, then only you are getting the patent. It means if you are developing biodiesel, yeah, herbal shampoo, or medicine, you have to disclose how you are preparing, what is the content of that in detail, then only you are getting the right. Otherwise, you will get objection from our office that your invention is not having novelty, because you are not clearly mentioned where exactly novelty lies. So we should mention how your product or process is new, qualifying the definition of novelty. All details should be given in the application. We are doing research while doing MPhil, PhD, project in the BSc, BE, MTech, or MSc. But while doing your research, are we doing discoveries or invention? Still we are in confusion. Discovery means finding or exploring something which is already exists in the nature, and discovery as such, no technical effect. For example, if I am isolating some bacteria from your area, like dairy industry of Akola, we know some lactic bacteria present there, but the process what I'm employing, the process of isolation of bacteria from dairy industry of Akola, we know bacteria present, but I'm employing process, it may be new, then you can get patent, but not for the microorganism as such, because you are discovering that. But genetically, if you are modifying that microorganism, again you can get patent for that. So यदि आप इन्वेंशन करते हो, नया हो, तो डेफिनेटली आप पेटेंट फाइल कीजिए. रिसर्च के टाइम, प्रोजेक्ट टाइम, when we can ourselves judge your topic,
Your research work is qualifying the definition of invention. इन्वेंशन यानी न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, जैसे कि एटीएम मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, टेलीफोन है. प्रोसेस मीन्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शैम्पू, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्यूरेजेस, और ये सब प्रोसेस यूजफुल होना चाहिए, प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए. अगेन दे शुड बी न्यू, नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस एंड नॉट पब्लिक नॉलेज बिफोर द फाइलिंग डेट. पेपर पब्लिकेशन टाइम में भी हम क्या करते हैं, वी चेक वेदर माय वर्क इज इन द पब्लिक डोमेन और नॉट. इफ नॉट, देन ओनली आई एम गोइंग फॉर द पब्लिकेशन. सेम वे, यदि आपको नया कहना है तो इट शुड बी न्यू, देन यू आर क्वालिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन. आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं. सिंपल एग्जांपल, शार्पनर. व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वाज नॉट नोइंग शार्पनर, क्योंकि हम ब्लेड यूज करते पेंसिल शार्प करने के लिए. लेकिन सीए बुशर ने इन्वेंट किया, मार्केट में अभी अवेलेबल है वो शार्पनर, बहुत सारे के शार्पनर. इट्स एन इन्वेंशन एंड द साइंटिस्ट सीए बुशर इज एन इन्वेंटर फॉर दैट. आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेके आइए, यदि आपके पास पेटेंट हो तो आपको इन्वेंटर कहलाएंगे, नहीं तो आप नो वन एल्स. इसलिए इन द जनरल नॉलेज इन द स्कूल वी नो हु हैज इन्वेंटेड एरोप्लेन, हमको पता है. हु हैज इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, हमको पता है कौन इन्वेंट किया है. वैक्सीन किसने लाया, हमें पता है. इवन टेलीफोन किसने लाया, वी नो. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दिस एग्जांपल. Alexander Graham Bell has invented this telephone in the year 1876. आपने बहुत मराठी पिक्चर हिंदी में भी देखे होंगे कि ये टेलीफोन यूज में था. ये टेलीफोन होते हुए साइंटिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन थॉट ऑफ गिविंग द मोबाइल फोन. व्हाट वाज नेसेसरी, व्हाई दे थॉट, उनके मन में क्यों आया कि हमें मोबाइल भी चाहिए. सो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और यू कैन आंसर माय क्वेरीज. यू कैन पुट योर इन योर व्यूज, आपके थॉट्स मुझे बताइए. व्हाई समवन हैज गॉट आइडिया टू ब्रिंग मोबाइल फोन्स इन पब्लिक. एनीवन, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, एनीवन कैन. उनके मन में क्यों आया कि हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल पब्लिक में आया. एनीवन? बिकॉज दिस टेलीफोन इज हैविंग सम डिसएडवांटेज. एक कि इस टेलीफोन को मैं मेरे कैबिन से प्रिंसिपल सर के कैबिन में नहीं ले जा सकता हूं. मुझे फोन करना है तो 10 टाइम्स घुमाना पड़ेगा. आई कैन नॉट कैरी इन द मीटिंग, नॉट इन द जेब, नॉट इन द ट्रेन, नॉट इन द बस. ये सब को ओवरकम करने के लिए वी गॉट द टेबल फोन, वेर इन यहाँ पे मैं डायल तो कर सकता हूँ 1 2 3, बट अगेन आई कैन नॉट चेंज फ्रॉम माई कैबिन टू माई प्रिंसिपल्स कैबिन. टू ओवरकम दैट, बाद में आया कॉर्डलेस फोन विच वॉज लॉन्ग. वी कैन टेक इन द हॉल, किचन एंड ड्राइंग रूम, बट वी कैन नॉट टेक इन द मीटिंग, nor in the jib, nor in the car, nor in the plane. To overcome that, we got the mobile phone in India in and around in the year 2002. If you remember, simple Nokia mobile था, silver color था, heavy था, और more than 5,000 rupees was the price of that. Now 500,000, 2,000 up to 40,000 mobile का price है. What is this? Improvement of technology from AG bell to mobile. जब मोबाइल आया, इनकमिंग और आउटगोइंग ही था. नाउ वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी, नाउ वेबएक्स, जूम मीट, गूगल मीट. व्हाट इज दिस? इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एजी बेल टू मोबाइल फोन और जूम मीट. सो मुझे यही कहना है कि आपके, आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री हो, बायोटेक हो, बॉटनी हो, किसी फील्ड को, एमसी हो, बीएससी हो, नया कुछ टेक्नोलॉजी लाते हो या इम्प्रूवमेंट भी करते हो, जैसे टेलीफोन से मोबाइल तक, उससे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेटेंट मिलता है. लेकिन इम्प्रूवमेंट, इफ इट सॉल्व सम प्रॉब्लम्स और कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, तभी आपको पेटेंट मिलता है. लाइक ब्लूटूथ, पहले ब्लूटूथ था क्या मोबाइल पे? नहीं. नाउ एवरीवन इज हैविंग ब्लूटूथ टू ट्रांसफर द नोट्स, मूवीज एंड पिक्चर. कार्स, टाटा मोटर्स था, महिंद्रा था, मारुति सुजुकी, हुंडई, बट नैनो केम इन बिटवीन. व्हाट इज दिस? इन्वेंशन टेक्नोलॉजी, इसलिए उसे भी पेटेंट. वैक्सीन, फूड, ये सब टेक्नोलॉजी है. टेक्नोलॉजी को पेटेंट मिलता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या प्रोसेस हो. यदि आप प्रोसेस बना रहे हैं चाय बनाने का, तो यदि नया हो तो उसे पेटेंट मिल जाता है. यदि सेम हो तो इट कैन नॉट गेट द पेटेंट फॉर दैट. ड्रोन्स,
Smart cards, ATM machines are the examples of invention, that is technology. Another kind of intellectual property called designs. Design means shape, configuration, pattern, ornament, composition of lines, or apply to any article 2D और 3D form. मैंने लिया बजाज आयरन बॉक्स, आपके घर में भी आयरन बॉक्स होगा, उसकी आप डिजाइन देखिए वो डिफरेंट है. सो एनीथिंग, आप पेन डिजाइन लीजिए, शॉर्पनर डिजाइन देखिए, even this all three designs you can check your office, maybe different designs. Spectacles देखिए, anything which is look new, that's a design. Flush design, mobile design, brush designs, कार डिजाइन, हैंडल, ये सब नया कुछ करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोटेक्शन देगा, उसकी रॉयल्टी भी मिलती रहेगी, आपको फायदा भी होगा, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं. सो वी शुड थिंक ऑफ दैट. mere functional or technical feature of the article are not considered design. अभी फ्रिज है, फ्रिज कैसे काम करता है डोंट बॉदर, वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है दैट्स पेटेंट, बट हाउ इट लुक्स, कैसे दिखता है, दैट्स एन डिजाइन. टर्म उसका 10 साल है, यू कैन एक्सटेंड फॉर 5 years, टोटल 15 साल तक आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी. इवन सेट ऑफ आर्टिकल्स, कप सेट, सोफा सेट, स्पून सेट, चेयर सेट, ये सब भी रजिस्टर हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यदि वो नया हो तो. सैनिटाइजिंग मशीन, न्यू डिजाइन विच ऑलरेडी रजिस्टर्ड. यदि आप फार्मा में देखते हो एम्पुल्स, ए एम्पुल देखिए, इसकी एम्पुल देखिए, ये तीनों की डिजाइन अलग है. ए इंजेक्शन देखिए, A3 देखिए, उसकी डिजाइन अलग है. एक कैप्सूल देखिए, एक कैप्सूल डिजाइन अलग है. सो एनीथिंग जो भी नया हो, if it is beautiful, qualifying the definition of design, you can get design protection in the government of India. टेक्सटाइल और ज्वेलरी में देखिए, कर्टन डिजाइन्स, बेडशीट डिजाइन, ड्रेस डिजाइन्स, इयररिंग्स, all these are bangles, even necklaces, watches, finger rings, all these are new designs. I'm using simple Timex watch, design is like this. Students and professor might having different company watches. Please see the design totally different. So आप जो भी नया डिजाइन लेके आए, यदि वो पब्लिक में नहीं हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं और उसके रॉयल्टी ले सकते हैं. डेली प्रोडक्ट्स देखिए, ऑफिस बैग, वैलेट, आयरन बॉक्स देखिए, ये अलग है, ये अलग है. कोम देखिए अलग है, आपकी जेब में देखिए कोम अलग होगा, मेरा कोम का डिजाइन ऐसा है, नया डिजाइन. सैनिटाइजिंग बॉटल्स देखिए, नए नए अलग अलग कंपनी डिजाइन अलग है. वाटर बॉटल देखिए, एक्वा फाइन, सनरिच, सनगार्ड, कोकोला, माजा, स्प्राइट, सबकी बॉटल डिजाइन अलग है. पेन्स डिजाइन, फ्रिज देखिए, कोल्हापुरी चप्पल देखिए, एडिडास की शूज देखिए, प्यूबा के देखिए, सबकी डिजाइन अलग है. इवन शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट, सबकी डिजाइन अलग है. सो ईच काइंड ऑफ डिजाइन यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इवन शॉर्पनर तो पता है, लेकिन ड्यूअल इन नेचर, नया डिजाइन. पेंसिल पता है, लेकिन ए फेसिंग नया है. बिस्किट तो बहुत सारे पता है, मोनाको, पार्ले जी, गुड डे, बॉर्न, लेकिन नया बिस्किट डिजाइन. क्लॉक, अलार्म क्लॉक तो पहले थे, अभी मोबाइल ही हम अलार्म क्लॉक यूज कर रहे हैं, तो वी आर नॉट यूजिंग, बट यू कैन सी मेनी कंपनी हैविंग डिफरेंट डिजाइन्स. ए सिग्नल सिस्टम, एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी. सिग्नल सिस्टम कैसे आया? गैरेटे मॉर्गन जब रोड क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने टांगा और कार के बीच का एक्सीडेंट देखा, एंड ही थॉट हाउ कैन आई प्रिवेंट फर्दर एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होते हम हॉस्पिटल पहुंचाते या पानी देते, लेकिन he has found the solution for technical problem, that's an signal system. अभी हम सब चौराहे पे देखते हैं, आपके अकोला डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे जगह सिग्नल है, यू कैन चेक. हम तिरुपति में बालाजी मंदिर आए थे तो सिग्नल बहुत सारी सिटी में क्रॉस करना पड़ा. इन्वेंशंस मेक्स आवर लाइफ सेफर. न्यू डिजाइन्स, न्यू डिजाइन, सी न्यू डिजाइन्स. ये डिजाइन एक स्टूडेंट ने बनाया है, उसका नाम है विक्रम दीनोभाई पंचाल. वाई कांट आप भी डिजाइन या टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ला सकते? क्यों लोग वही साइंटिस्ट लोग कहलाते? वाई कांट यू एंड मी? सी, उनके मन में कैसे आया कि ये नया डिजाइन लाए? क्योंकि उन्हें नया प्रोजेक्ट करना था उसे, तो उन्हें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पे गया,
कूली लोगों से बात की कि एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू आर कैरिंग डायरेक्टली स्टोन्स, ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट ऑन योर हेड। उन्होंने बोला वी आर हैविंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बैक पेन, डिस्क पेन, टू ओवरकम दैट उन्हें डिजाइन लाया। देखिए इट इज नॉट ऑन द हेड, इट्स अबव द हेड, मोस्ट ऑफ द वेट एंड शोल्डर। फिजिक्स फार्मूला, distribution of weight throughout the body. So at least we are keeping away from neurological disorders. So please, there is a problem, you are given solution. कोरोना का प्रॉब्लम है, वैक्सीन सोल्यूशन है। सो यू हैव टू फाइंड solution to any kind of problem, you can get patent for that. Another kind of intellectual property called semiconductor integrated circuit layout design. आपको पता है फिजिक्स लोगों को, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर लोगों को पता है व्हाट आर SiCs. These are fabricated from a complex series of layers of semiconductors, metals and dielectrics. To get it registered in the government of India, these should be original, distinctive, capable of being distinguished from any other layout of design, and have not been commercially exploited anywhere else, means throughout the world. If it is new, then we are giving permission, granting this design registration term is 10 years. Another kind of intellectual property, trademark brand, Reliance, HP, Tata, Monaco, all these are trademark. ए एडवर्टाइज करता है कंपनी का, प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम बाइंग द सेकेंड रेट क्वालिटी। यदि मुझे पार्ले जी बिस्किट लेना है तो पार्ले जी नाम देखना चाहिए, अदरवाइज आई विल बी चीटेड इन द पब्लिक। आप मॉल में देखिए प्यूबा शूज 4000 से आगे है, मुंबई की भिंडी बाजार में देखिए 200 में मिलता है, बिकॉज दे आर चेंजिंग मार्क एंड स्पेलिंग ऑफ दैट एंड दे आर सेलिंग इन द नेम ऑफ प्यूबा और एडिडास। आर विथ एन सर्कल बहुत सारे प्रोडक्ट देखेंगे वो ट्रेडमार्क मिल चुका है। टीए मीन्स उन्हें अप्लाई किया, येट टू गेट द ट्रेडमार्क। आप यदि फाइल करते हो तो एग्जामिनेशन होता है, देन अपोजिशन भी आ सकता है, आपको रिपोर्ट को रिप्लाई करना है। सब कुछ होने के बाद यदि नया मार्क हो, नया डिजाइन हो, नया नेम हो तो आपको रजिस्टर मिलता है, उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। टर्म 10 साल है, every 10 years you can extend for up to how many long you want, like टाटा बाटा कितने सालों से मार्केट में, वैसे आप रिन्यूअल फीस पे करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रेडमार्क्स लाइक कलेक्टिव मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क्स, टैग लाइन, स्लोक्स, अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं। और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, प्लेस नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ ओरिजिन, क्वालिटी, reputation or other kinds of products like Darjeeling tea, Kanchipuram silk saree, Ratnavi sev, Tirupati laddu, Kanchipuram silk saree, Bhusawal banana, Nagpur oranges, ये सब GI है। मगई पान, देवनली पमिलो, अपिमुडी मैंगो, ये सब GI मीन्स उस एरिया की कंडीशन किसको फेवर करते हैं, हाउ इट इज गुड, यू कैन गेट GI फॉर दैट। और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कॉपीराइट। Copyright is a bundle of rights. It restricts unauthorized copying and reproduction of an original expression, literary work, movie, music, painting. The term is life of the author plus 60. आप देखते होंगे बहुत सारे गाने हम लोग अभी पेड लेते हैं, लेकिन उसकी रॉयल्टी अभी भी उसके गायक को जाती है, बिकॉज दे आर नो मोर, वो रहे ना रहे, क्योंकि लाइफ टाइम है। जो बुक्स आप डिग्रीज में, पीजी में आप रेफर करते हो, उसके लिए रॉयल्टी जाती है, क्योंकि लाइफ ऑफ द ऑथर, जो ऑथर जब तक है उसके बाद 60 साल उसको रॉयल्टी जाएगी। ये कॉपीराइट का खासियत है। यदि आप बुक्स लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, ऑटोग्राफी या बायोडाटा और पोएम्स, ये लिटरेरी वर्क में आता है, अंडर सेक्शन 2 आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपके पास आर्टिस्टिक वर्क हो तो अंडर सेक्शन 2C में, ड्रामेटिक वर्क्स हो तो अंडर सेक्शन 2S में, म्यूजिकल वर्क्स अंडर सेक्शन 2P, sound recordings under section 2XX, cinematography films under section 2F. So each kind of work you can get registered in the government of India. आपने देखा होगा तेलुगु मूवी हिंदी में डब हुआ, व्हाट इज द डबिंग, कॉपिंग ऑफ दैट। आप गूगल में देखिए द तेलुगु मूवी हिंदी में कितने डब हुए, इन्फ्रिंजमेंट केसेस चल रहे हैं। और एक मूवी है श्याम सुंदर रॉय इन तेलुगु, दैट इज डब्ड इन हिंदी ऑलरेडी, दिस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। आप 3 इडियट्स देखिए, उसमें भी पेटेंट का जिक्र होगा है, उसको 427 पेटेंट होते हैं। व्हाट इज दैट पेटेंट, नया टेक्नोलॉजी। नाउ आई हैव टेकन वन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट
सिंगल डिवाइस विथ मोर देन वन IPR। एक डिवाइस यदि आप बनाते हो तो कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये देखो इसका मार्क है एप्पल ट्रेडमार्क। जो डिस्प्ले होता है वो टेक्नोलॉजी आप पेटेंट ले सकते हैं, पूरे बॉडी ऑफ इसको डिजाइन ले सकते हैं। जो मैनुअल होता है अपने बैग में इस लैपटॉप के साथ, उसके इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इट कैन बी कॉपीराइटेड, और जो अंदर का सर्किट है उसको भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ताकि दूसरी कंपनी लाइक सैमसंग हो या डेल हो, दे नेवर कॉपी द टेक्नोलॉजी ऑफ एप्पल बिकॉज ऑलरेडी दे गॉट प्रोटेक्शन। उसी तरह यू कैन चेक नोकिया, सैमसंग, रिलायंस, जियो, दे कैन नॉट कॉपी ईच अदर टेक्नोलॉजी। तो आप भी कुछ नया टेक्नोलॉजी बनाते हो, प्रोसेस बनाते हो, बुक्स लिखते हो, तो अपने अपनी तरह आप डिजाइन रख दीजिए। इफ इट इज डिजाइन, पेटेंट है तो टेक्नोलॉजी के लिए डाल दीजिए, और डिजाइन है तो डिजाइन में जाइए, कुछ बुक्स लिखते हो तो कॉपीराइट में आइए, सॉफ्टवेयर एसेस है तो भी कॉपीराइट में लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, उसको पेटेंट मिलता है। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। यदि आप गवर्नमेंट में आना है तो आप एग्जामिनर ऑफ पेटेंट डिजाइन बन सकते हो। उसके लिए MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स और एनी ब्रांच ऑफ बी एजुकेशन चाहिए। जब भी एडवर्टाइजमेंट आती है, दो पेपर होते हैं, वन ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। इफ क्वालिफाई गेट जॉब इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आना है, एग्जाम ऑफ ट्रेडमार्क, GR कॉपीराइट बनना है, तो आपको लॉ की जरूरत है, आपको लॉ ग्रेजुएशन भी चाहिए, तब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ सकते हैं। और दूसरे प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी है, आप पेटेंट एजेंट बन सकते हैं। उसके लिए एनी साइंस ग्रेजुएट, BSc हो, BC हो, एनी साइंस ग्रेजुएट कैन बिकम पेटेंट एजेंट। ट्रेडमार्क एजेंट बनना है, कॉपीराइट एजेंट, तो एनी लॉयर कैन बिकम एजेंट्स। और आप IPR सेल, IPR पॉलिसी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, MNC में, यूनिवर्सिटीज में काम भी कर सकते हो। और बहुत सारे NGOs काम करते हैं, वहां पे भी काम कर सकते हो एज एन पेटेंट एनालिस्ट। और बहुत सारे IPR फर्म्स हैं बिग सिटीज में, जैसे नागपुर में बहुत कम है, पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर, मेनी प्लेसेस में है, वहां पे भी आप वर्क कर सकते हैं। यदि आपको, मैंने बोला आप तो डॉक्टरेट होंगे, PhD लिए होंगे, लेकिन यू आर नॉट इन्वेंटर, तो आप साइंटिस्ट हो, फैकल्टीज हो, स्टूडेंट्स भी हो, तो आप इन्वेंटर बन सकते हैं। कैसे? बाय सिंपल अप्रोच। आप आइडेंटिफाई वन प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर रिसर्च, सॉल्व दैट प्रॉब्लम, अप्लाई फॉर द पेटेंट। मैं केमिस्ट्री का हूं, तो मेरे फील्ड में प्रॉब्लम है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड फॉर्मुलेशन फॉर पैरासिटामोल, तो मुझे नया लाना है प्रोसेस, तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे पेटेंट मिल ही जाएगा। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम माय कैंपस वेस्ट, मैं कंप्यूटर का हूं, BSc इन कंप्यूटर साइंस, तो मॉस्किटो कैचिंग डिवाइस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई एम ब्रिंगिंग डिजिटल मॉस्किटो कैचिंग डिवाइस, नया है, तो आप ले सकते हैं। मैं बायोटेक्नोलॉजी का हूं, तो मुझे हर्बल मेडिसिन फॉर कैंसर लेके आना है, हर्बल मेडिसिन फॉर पार्किंसन डिसीज लेना है, ये मेरा केमिस्ट्री का। फिजिक्स हो तो कैपेसिटर, नया कैपेसिटर लेके आए, नया फ्रिज लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो, सो एनीथिंग इफ यू सॉल्व प्रॉब्लम यू कैन गेट द पेटेंट। फॉर एग्जांपल, जब भी हम आपके अकोला डिस्ट्रिक्ट में जो मंदिर है सेगांव में, वहां पे कितने सारा फूड हम एक जगह कलेक्ट करते, आई डोंट नो व्हाट दे डू, बट आप वो फूड वेस्ट से कुछ बायोगैस बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, तो इट्स एन टेक्नोलॉजी, आप बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम फूड वेस्ट ऑफ सो एंड सो, और प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम माय कैंपस वेस्ट ऑफ माय प्लांट्स। वो छोड़िए, गणपति में हम कितने दिन गणपति बनाते हैं, 9 दिन, 10 दिन, बहुत सारे फ्लावर्स लेके आते हैं, गार्लैंड्स लेके आते हैं, आफ्टर 11th डे हम पानी में उसको डुबा देते हैं, बट वी आर पोल्यूटिंग द एक्वेटिक लाइफ, पॉन्ड, रिवर, उसमें फिश होंगे और कुछ होंगे, तो वी आर डिस्टर्बिंग फूड चेन एंड फूड वेब। व्हाई कांट वी डेवलप बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉन्ड और रिवर वाटर, क्योंकि गवर्नमेंट केमिकल डाल देता है तो सब खराब, तो व्हाई कांट वी ब्रिंग बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर दैट। Okay, so you can get patent for that। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन लेके आए, हर्बल मेडिसिन फॉर कैंसर, सोल्यूशन लेके आ रहे हो। ET मशीन पहले था क्या? नहीं, हमने लेके आया। पहले एक्सरे था, CT स्कैन मशीन था, तो CT स्कैन मशीन क्या है? इम्प्रूव वर्जन। एक्सरे में तो आपको लंग इन्फेक्शन है, लेकिन CT स्कैन में 5 स्कोर है, 6 का 7, वी कैन जज इट आउट। सो इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, so you can improve in agriculture field,
और केमिकल फील्ड, बायोटेक, माइक्रो, हर एक फील्ड में आपको ले आ सकता है इम्प्रूवमेंट। यदि आपको पेटेंट लेना है तो आपका टेक्नोलॉजी नया होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, और उसे 3 क्राइटेरिया, 1 शुड बी नॉवेल, इन्वेंटिव एंड इट शुड हैव एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। ये तीनों भी लेक्चर कोण देणार आहे? नाही 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 मी तर माझं लेक्चर मध्ये आहे. पंकज सरांना विचारा ना, ते देतील. मी आता लेक्चर मध्ये ऑलरेडी आहे. सो वी कैन गेट पेटेंट फॉर apparatus, devices, chemical, many products. आप नया मशीन, वाटर प्यूरिफाइंग मशीन, हमको पता है एक्वागार्ड, एक्वाफाइन, सनरिच, उससे अलावा और कुछ लेके आते हो तो उसको भी पेटेंट मिल जाता है. स्मार्ट केन आंधों के लिए नया इन्वेंशन हो गया. सो नया कहने के लिए इट शुड बी न्यू, इट शुड हैव इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. ये सब होना चाहिए, तब आपको पेटेंट मिलता है. यदि आप पेटेंट नया कुछ लाते हो तो कैसे फाइल करना है, आई विल शो यू हाउ टू फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया. और कौन फाइल कर सकता है? एनी पर्सन, natural, startup, MSME, anyone can file the patent application. There is no age bar limit nor educational limit, क्योंकि आपको बूढ़ा या छोटा बच्चा भी नया इनिशिएशन ला सकता है. नागपुर में एक निम्बोरे लड़का है, उन्होंने एक छोटा सा डिवाइस बनाया, उससे आपको पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है. चेन्नई का एक छोटा बच्चा है 16 साल का, उन्होंने भी एक लिया है, एक्सटेंशन ऑफ ग्रीननेस ऑफ बनाना ट्री. वो जैसा बनाना लीफ है हरा वैसा ही दिखेगा. स्टार्टअप, एमएसएमई, कॉलेज, कोई भी पेटेंट फाइल कर सकता है. कैसे फाइल करना है? डायरेक्टली आप महाराष्ट्र के हो, मुंबई में जाके फाइल कर सकते हो ऑनलाइन. सिंस जुलाई 2027 वी हैव गिवन फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग. और जुडिक्शन है उसमें, मुंबई कवर सेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ दामन दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली. चेन्नई है तो सेटअप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, वो कवर. तो अपना जुडिशरी में आपको फाइल करना है, एक कंपलसरी है. फाइल करने के क्या क्या लगता है? वी आर हैविंग फॉर्म 1 वेयर इन applicants all details you have to mention. Name of the applicant, mobile number, SMS alert, what type of application you are filling. In that paragraph 12 has to sign by all the inventors, means those who are helping to carry out the research or a project. Form 2 कि you are filing provisional or complete. Provisional means once you are getting idea in your mind. Complete means after completion of research with the claims. तो कौन सा फाइल कर रहे हो वो बताना है. Form 3 यदि वही invention, if you are filing the foreign countries, Form 3 is required. Every 6 months you have to mention all the details of that. Form 5 जो आपको हेल्प करते हैं उनका नाम डालने के लिए Form 5. Keep in mind that पेपर पब्लिकेशन में हम डालते हैं फर्स्ट ऑथर, मैं, सेकंड और कोई, लेकिन यहाँ पे प्लीज फील दैट whose name you are adding, they are having equal right. तो सोचिए और उनका नाम डाल दीजिए. रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन इज Form 18. ऑफलाइन करते हो तो फीस भी ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन करते हो फीस भी ऑनलाइन देना है. फीस है 1600 फॉर नेचुरल पर्सन, 8000 फॉर अदर्स, अप टू 30 पेजेस, 30 पेज तक की. उसके बाद पर पेज फीस अलग है, 160 फॉर इंडिविजुअल, 800 फॉर द कंपनी. क्लेम्स 10 से ज्यादा हो तो 320 फॉर इंडिविजुअल, 1600 फॉर द अदर्स. ये ऑनलाइन फाइलिंग फीस है. ऑफलाइन करते हो तो 10% इन एडिशन. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. लिख लेने की जरूरत नहीं या नो वरी करने की जरूरत नहीं. एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट. प्लीज सी द वेबसाइट ऑफ इंडियन पेटेंट ऑफिस. आप एक्सपर्ट एग्जामिनेशन फाइल कर सकते हैं, उसमें 1 साल के अंदर आपको पेटेंट मिल जाता है एज पर रूल 24B. कब कर सकते हैं? when you are choosing India as an PCT country, means patent cooperation treaty. In that if you are choosing India as an international searching authority, means जो सर्च करके रिपोर्ट बनाते हो, या applicant is startup जो भी होता है वो लोग, और as per 2019 rule one of the applicant in your group is ladies, they can, or गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन can also request. और हर एक कॉलेज के लिए 80% फी कंसेशन. तो आप भी कॉलेज के हो, आपको 80% फी कंसेशन, प्लीज फाइल कीजिए. ये हमारा वेबसाइट है www.ipindia.go.in. यदि आप पेटेंट्स के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए. डिजाइन यहाँ, ट्रेडमार्क और जीआई. ट्रेनिंग सेंटर के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगा. ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए. पब्लिक सर्च, यदि आपकी टेक्नोलॉजी नई है या नहीं वो देखना है तो वहाँ सर्च कीजिए. और आपको पेटेंट एजेंट एग्जाम देना है, आप ग्रेजुएट हो, साइंस ग्रेजुएट, तो
यहाँ पे ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप प्लीज सर्च कीजिए। और आपके पेटेंट फाइलिंग का फीस, एक्ट, रूल, मैनुअल सब कुछ यहाँ मिलेगा। और हमारे डिसीजन भी हम किसी को ग्रांट किए, कितने पेटेंट दे, सब कुछ इसमें कंट्रोल डिसीजन में आ सकता है। यू कैन प्लीज गो थ्रू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेटेंट हम कैसे देते हैं? वंस यू आर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन फिजिकली, इट्स गो फॉर डिजिटाइजेशन, हम उसको डिजिटाइज करते हैं। Then we screen and classify using International Patent Classification System, that is IPC 7. Then, if you are requesting for early publication within 1 month or week, we will publish that. Request करते हो तो, otherwise 18 month publication. Once 18 month के बाद publish होता है तो कोई भी opposition में आ सकता है. That is called pre-grant opposition. कि already known to me, नया नहीं है, many ground in section 25(1) A to F. So आप opposition में आ सकते हैं. If you are requesting for examination within 48 months, then your application is allotted to the examiner and controller. They examine your case, they make the report on the case, formal technical objection. They give you the report that is called first examination report. Then you have to reply within 6 months. If you are unable to reply, you take the extension of 3 months. Within 9 months, by hook or crook, you have to reply for that. If reply is okay, patent will be granted. If reply is not okay, you will get chance of hearing across the table, means like a court hearing. Applicant, opponent, we are the deciding authority. So each ground of applicant is discussed, then if able to solve, will be granted. In post-grant objection, only interested person can oppose. Here I told you anyone can oppose, but after the grant, only interested person can oppose within 1 year from the date of publication of the grant of patent. Once option filed, we constitute an opposition board inside the office. They give recommendation on that. Simultaneously, we forward all the opponent's ground to the applicant. They give detailed reply on that. The reply received from the applicant again forward to the opponent. They give reply on that. If applicant or opponent request for the hearing, we conduct the hearing that is called post-grant hearing date. In that, all the grounds of opponent are discussed with the applicant. If applicant is able to overcome, it will be granted. If applicant fails to overcome, it will be rejected. If you're granting or rejecting, we give the order. You can challenge our order in the High Court or Supreme Court for grant or refusal. This is the way of granting the patents in India. Thank you. Any questions you can ask me now. Sir, I have one question. Yes, Can please. I ask? Yes, please. Myself, Dr. Rajiv from Shankarlal College. I'm really very good afternoon, sir. I'm very happy to have such a nice talk on IPR. It's really a feast of knowledge about IPR personally for me, sir. Thank you very much, Dr. Bharat, sir. Sir, I have one question, one or two questions. Sir, first question is, I have one innovative idea, but I don't have any plan to execute that idea. In such case, can I file the patent for such innovative idea? Yes, but provisional application. Provisional means as soon as that idea in your mind, you can file provisional. But within 12 months from the date of filing, you have to file your complete application with the claims. Say your part. Within 12 months, you have to complete your research work and you have to file application for the complete. Otherwise, it cannot. So please think, prepare yourself if you are able to complete within 12 months or not. If not, wait, otherwise you can file. Or if you are filing, you can even post it also. There are chances you can file because idea can be filed, but idea should come in the form of product or process. Definitely you can file the patent application. Next question, please. Okay, sir. Sir, another question is, what is the scope for BSc students in case of placements in IPR office? Not IPR office, but you can become patent agent. You are the mediator between IP office and the private companies and organizations like your institute, many more. You can become patent agent. If you are MS in chemistry, biotech, micro, then you can come in the government office. As I told you, there are exams you have to qualify, then only. Sir, one more question, please. Sir, can I patent my research work which has already published in international journal? See, once published within 1 year from the date of publication of that journal, you can file, but not beyond that. Only time is 1 year from the date of your own publication, not beyond that. Okay, sir. Thank you very much. Good afternoon.
Sir, I have one question. Yes, please go ahead. Yes. First of all, good afternoon, sir. This is Dr. Shirbhate. I am zoology professor working in this college. Sir, I have one question that I am having, say, hundreds of photographs of wildlife. I used to go in the field and I have so many good photographs of wildlife, including birds and all other things. So, shall I copyright all these photographs and what will be the procedure for it? This is my See, first question. And second one is, while going to the census, there are so many complications we found during during census surveys of wild animals. For example, if you want to go for tiger census, and if we put one camera over there and camera trapping procedures are there, and we are having a very good camera provided by an agency, but there are so many complications to use. For that, we have prepared one particular model which will cover that camera, and there are so many features which we are having the ideas. Shall This is my second question. That is, shall we prepare the patent for that particular say model, and what will be the exact procedure for it? Please guide us, sir. yes. Thank you. First question is you can go for the copyright, but it should be new. But copyright you can file for the pictures what you are taking if it is something new and good. Okay. And second, how to file the copyright. There is copyright.gov.in website is there. There form 14. You can open it out, log in that. Just like how you are booking your train ticket by creating your login and password. So create your login and password on the website. There is form 14. Fill that form. Lastly, upload the photo and pay the 500 rupees per work fees. Okay. 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 Uh-huh. In case of second question, what exactly you are doing with that camera? What is this new device? If it is new device, then go for the patent. If it is only design, go for the design. If it is patent, then you have to write how you have made that new design. Okay. Write about that title of the invention, detailed description, how it Okay. is, what are the results you are getting. Then you claim a device for capturing the wildlife animal for sensing so and so, comprising steps of what is that. It's for Okay. patent. But really, if your camera and this are only mere arrangement of known devices, it's not an invention. Then you can go Then, for the design. what we have prepared, that we have make one cover for that particular camera. It is made up of a metal, and it is having so many new things So you can, which is not in the yes, market now. that's you can tell a device for covering the camera having so and so feature comprising steps of जो है वो आप देख सकते हैं. But हम search करेंगे it's नया है क्या नहीं. If until unless we search and tell you, we cannot say it's novel or not. I have to carry out the Yes. primary search for that. So it is Yes. Yes. left to you. You can primarily search, carry out with the NCBL or website of patent office also search is there. Carry out the basic search of that. Definitely Okay. you Okay. can do that. Or Yes. you are from geology, a food composition for fisheries. You can claim as a composition. Yes. Food composition for this birds, or Ah. herbal composition for birds to improve the more flesh and all. There are many subject in geology also get a patent. Or process of treatment of pond water by herbal methods to our pisciculture. Many are there in the topic yet to get in. People think that geology में क्या patent लेंगे. अरे there is too much is there to get Yes. patent. Yes. There If are you so have many things, sir. Yes. 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 Thank you, sir. Thank you. any question, please? Hello, Yes. sir. Is there any question? Excuse me, sir. Yes, I have one question. please. Can a process of synthesis of chemicals be patented? Yes, definitely. The process of synthesis of so and so compound of formula so and so, or process of preparing composition comprising so and so. It is a claim of first compound. You can go for that. If process parameters are new, definitely you get the patent for that. pH, temperature change, ingredients, catalyst, something you're changing, definitely your process new. Yes, yes. Okay. Thanks. Thank you, sir. Any other doubts? Any questions? Okay, sir. Thank you.
Okay, thank you so much, sir, for your motivational words to impart greater awareness about the issue of IPR, which has gained a special importance for all the domains of socio-economical development, and to understand the patent ability criteria in very details and the viable aspect of the patent. So once again, thank you so much, sir. Now, I would like to call Honorable Dr. Pandey, sir, for presidential remark. Thank you very much, sir. Today's guest speaker, who has given us a feast of knowledge, Dr. Suryawanshi, sir. Our IQAC coordinator, Dr. Shirsat, sir. Coordinator of this event, Mr. Dikshit, sir. Technical head, Mr. Suradkar, sir. And dear participants. Dr. Suryawanshi, sir, has rightly focused on three key aspects. What I understood. First is novelty, second is innovative step, and third is the industrial application. Now, dear parents, participants, novelty is the creation of new idea. If you have any new idea, that can be patented. Dr. Suryawanshi sir has rightly pointed out, you can patent an idea. For example, if you have an idea for the substitute of petrol or diesel, you can patent it. You can patent new solar cells. New reagent for the chemical synthesis can also be patented. So this is the first thing, that novelty must be there for patentability. Second important aspect, what Dr. Suryawanshi sir has guided, that innovative steps should be there. For example, you know that drones were invented. Before that, if you have to shoot something from top, a combination of two aspects were needed. One, a camera person, and second, a helicopter. Now a drone has replaced both the things. So that is the innovative steps in the drone discovery or invention. And third most important point is the industrial application. What you patent, what you invent, or what you discover, unless and until it has no industrial use, then you should focus on the industrial application of the product. For example, I will give you one example. Simple charcoal. That charcoal has so many industrial applications that charcoal nowadays is used in the beauty products. It can be used in the adsorbents. Charcoal can also be used in toothpastes also. So, idea can be patented, process can be patented, and the product can also be patented. So, I request all the participants, budding researchers and budding talent in this area to focus on this issue and try to patent your idea. The guest like Dr. Suryawanshi sir is there with us to guide us always. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, lastly, I would like to call Mr. Shekhar Dikshit to propose vote of thanks. Sir, share the feedback link for the certificate. Hello, thank you very much, sir. A very warm good afternoon to one and all. Respected dais, myself Shekhar Dikshit, librarian, Shankarlal, Khandelwal College. It is my pleasure to deliver formal vote of thanks on this occasion. First of all, I like to thank President of today's function, Dr. Prasanna Pandey sir, for his presidential remark. Sir, I would like to tell you one thing. Dr. Prasanna Pandey sir has a patent in his name, and it is a proud thing for our institute. Later, I would like to thank Dr. Bharat Suryawanshi sir, Assistant Patent Controller, Rajiv Gandhi, National Institute of Intellectual Property Management. Sir, it is a very knowledgeable session. After your session, we come to know about patent, type of intellectual property, and it will help our researcher to file some patent. Thank you very much, sir, for your session. Later, I would like to thank Principal Dr. Sabu sir for his constant support. I would like to thank whole team of
Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property for their constant support. There are some people without whom this program cannot be possible. Mr. Rohan Shirshat, coordinator of this program, Mr. Nitin Surodkar sir, coordinator of technical. Sir, thank you very much for your support. At last, I would like to thank all the participants who has joined online with us. Thank you very much, sir. With the permission of President, this program is over. Thank you very much. थँक्यू. हो सर, व्हॉट्सअपवर हो सर, थँक्यू. नो प्रॉब्लेम. उद्या पडलं तर काही नाही, फक्त लोकांना फीडबॅक लिंक भरायला सांगा.